Okay, so right now we are gonna see how does this app really works and how does this app really looks. So I am opening this app now. Uh, this app is under maintenance. Wow. Hello guys, so welcome back to our YouTube channel. In today's video we guys are gonna majorly talk about the Y Connect app by Yamaha. To be very honest with you guys, it's not very great app, it's not 100% up to the mark, but still यार आज के time पे every company is providing the Bluetooth connectivity and Yamaha somewhere tried to provide a Bluetooth connectivity with a Yamaha Connect app. So just a basic, this app looks like bit like this on the phone. Now talking about how to connect this app with our bike. So उसके लिए this is a very simple procedure guys. जब आपको शोरूम से मिलता है यूजुअली तो वो लोग ही कनेक्ट करके देते हैं, बट जस्ट इन केस दे मिस आउट ऑन कनेक्टिंग इट, सो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू रिमूव द सीट. बाय द वे गाइज, दिस इज़ अ मॉडिफाइड सीट कवर विच आई गॉट विद अ यामाहा का ब्रांडिंग रिटन इन ब्लैक कलर. यूजुअली नहीं आता कंपनी से, सो आई डिड अ बिट ऑफ modification over here. Now talking about how to connect it with the app. So you basically have to remove the seat and here comes this barcode scanner. So you have to just open the Y Connect app on your phone, download it from Google Chrome, Google Play, or from the App Store in Apple, and you just have to connect it with the scan it with the barcode, scan the barcode and connect it with your phone, so your mobile and your bike gets connected. I'll be also showing you how this app works and what all features you get in this app. First, let's connect this app with our bike. See guys, right now the Bluetooth app is not connected here, so you don't see any of the app or any of the notifications over here. Once I turn the Bluetooth on my phone, so automatically it will get connected with my phone and with the Y Connect app. So over here you can see the two notifications. One says the app, so in that I have added basically the various apps, and the other one shows the battery percentage of my phone. Okay guys, so now it's a time to see like how this app really works and how does it looks like. So at the top of the screen, you once you open the app, you get the name of your bike written. So my bike's name is Sylvie. It comes as a Sylvie. नीचे हमें माइलेज दिखता है, बट उसकी जगह पे देयर कम्स द किलोमीटर्स, कि कितने किलोमीटर्स हमारा बाइक चला है. Now coming to this kilometers का point, how silly this app is. कि though this app is connected with the Bluetooth and वो automatically kilometers को track करता है, but see Yamaha wasn't that sure कि
ऐप इतना शायद ख़राब काम कर सकता है कि उन्होंने एडिट का फीचर भी दे दिया कि यू गो एंड एडिट इट। सो वो भी है। आफ्टर डैट कम्स द माइलेज का, टू चेक कि हमारा बाइक का क्या माइलेज है, एंड वी कैन चेक इट ओवर हेयर। सो राइट नाउ माई बाइक इज शोइंग एज अ 43.6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज, and it's pretty good because as I always mention this is a city bike, and city में इतना माइलेज सही जाता है बिकॉज हम एक कांस्टेंट स्पीड पर मेंटेन नहीं कर पाते। आफ्टर दैट कम्स अ वेरी अमेजिंग फीचर विच आई वुड से कि पार्किंग में हमने कहाँ लास्ट बाइक पार्क किया है, सो इट ऑटोमेटिकली गेट्स दैट प्लेस। तो वो चीज़ अच्छी है। कई बार हम लोग खो देते हैं कि हमें भूल जाता है कि पार्किंग में कहाँ था। स्पेशली दिस हैपन्स इन बिग सिटीज़ एंड बिग पार्किंग एरियाज। सो ये वो अच्छा है, गो करके आप वहाँ तक चलते हुए जा सकते हैं, विच आई अप्रिशिएट एंड विच आई रियली लाइक अबाउट दिस ऐप। सो वो इकलौता फीचर शायद ये होगा। उसके बाद कम्स दिस रैंकिंग, जो अभी मेरी रैंकिंग तो बहुत ख़राब हो चुकी है माइलेज एंड इको मोड में, दोनों में ही काफ़ी ख़राब है मेरी रैंकिंग इस टाइम पे। सो अदर देन डैट आपका कुछ नॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बाइक व्हीकल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन। फिर हमारे पास रेव्स डैशबोर्ड, ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि कैसे वर्क करते हुए फीचर आता है। रैंकिंग, राइडिंग लॉग्स। सो राइडिंग लॉग्स इज़ ऑल्सो अ गुड फीचर बिकॉज इसमें क्या होता है ना, जब भी आपका बाइक कनेक्टेड है आपके वाई कनेक्ट ऐप के साथ, सो ऑटोमेटिकली आपके लॉग्स क्रिएट होते रहते हैं, आप कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे कैसे गए हैं, एंड आप देख ही सकते हैं दिस ऐप इज़ रियली स्लो। सो ये हो गया अलग फीचर। सेटिंग्स में जाके आप अलग अलग ऐप्स रख सकते हैं, द ऐप्स विच यू वांट, जिनकी नोटिफिकेशंस आए आपके बाइक के स्क्रीन पर। So it's all about this app. Now comes a very important question कि why you think like कि Yamaha ने ये ऐप बनाया है, और is it really worth it to spend extra money? Almost ऑन रोड आते आते तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, बट 4,000 टू 4,000 का डिफरेंट आ जाता है दोनों बाइक के वेरिएंट्स में, FZ-X विदाउट ब्लूटूथ एंड FZ-X विद ब्लूटूथ। सो इस ऐप के लिए डू यू रियली थिंक कि इज़ इट वर्थ इट हम इतना एक्स्ट्रा लगाएं, बिकॉज उतना अच्छा है ये ऐप या नहीं? यू कैन सी इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू, यही सब कुछ करता है ये ऐप, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीचर मुझे तो नहीं पता। गाइज अगर आपको ज़रूर पता हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एंड बस इसी चीज़ के लिए, या फिर यामाहा को एक वेरिएंट रखना था बिकॉज दूसरी कंपनीज आ रही थी ब्लूटूथ वेरिएंट्स के साथ, तो यामाहा को देना था, तो दे जस्ट क्रिएटेड ऐप फॉर द नेम सेक। इट लुक्स मोर लाइक दैट बिकॉज सी दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक ऐप। इसका मैं क्या करूँ अभी, मतलब रेफ्स बोर्ड का, व्हेन आई एम नॉट इवन राइडिंग माई बाइक, या थ्रोटल कितना है, इको कितना है, क्या सीन है, डजेंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली। बट स्टिल शायद पार्किंग वाला फीचर अच्छा, तो उसके लिए अब 2 से 4 हज़ार एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हो जाओ। एंड मैं तो कर दिया हूँ अभी, सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू से इट इज़ वेरी ब्रिलियंट ऐप। हाँ, एक चीज़ इसमें और आता है, ये मुझे पहले पहले बहुत डाउट हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस ऐप, कि यहाँ पे जब मेरा फर्स्ट सर्विस था तो मेरा बैटरी का जो क्वालिटी था दैट वाज शोइंग एज अ गुड ओनली, बट ऑयल का फर्स्ट सर्विस जो 1,000 किलोमीटर्स पे था, उससे 950 तक आते आते वो रेड में चला गया। तो मुझे ऐसा लगा दिस इज़ रियली वेरी स्मार्ट ऐप। तो ये ऑटोमेटिकली बता रहा है बाइक का, भाई ऑयल ख़राब हो गया है इस टाइम पे, आई हैव टू गेट द ऑयल चेंज्ड। बट वो एक्चुअली क्या था कि यू हैव टू सेट इट, सेटिंग्स में जाके आप सेट कर सकते हो ऑयल रिप्लेसमेंट टाइमिंग, तो ऐसे करके बेसिकली आपको पता लगता है। सो दिस इज़ द ऐप। एंड जब आप सर्विसिंग भी करवाते हैं, आफ्टर डैट ऑल्सो यू हैव टू गो एंड एडिट इट ओवर देयर कि अभी आपका सर्विस हो गया है एंड नेक्स्ट सर्विस अभी इतने टाइम बाद आएगी। So you make your choice, guys. Be bit cautious. Like
instead of spending 4,000 on a Bluetooth variant, you can add in 4,000 more and buy a good riding jacket or other gears, safety gears, as we always promote on our channel. So it's completely your choice, and this is all about the app, guys.